Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video lecture 6 of fluid dynamics, and in this we will be doing the vortex line, vortex tube, vortex filament and rotational and irrotational motion, the angular velocity, etc. So we first write down the definition of vortex line. जैसे कि हमने स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन पढ़ी थी और उसकी डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन काफ़ी मिलती जुलती है कि ये फ्लूइड है, फ्लो हो रहा है। इसमें हम एक कर्व लेते हैं, इस कर्व के हर पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं। स्ट्रीमलाइन में ये जो डायरेक्शन थी टेंजेंट की वो फ्लूइड वेलोसिटी को शो करती थी। यहाँ पर ये डायरेक्शन जो है वॉर्टेक्स लाइन को शो करेगी, ये कर्व तो वॉर्टेक्स लाइन को शो करेगा और डायरेक्शन जो है vorticity vector की होगी. So we can write down a vortex line is a curve drawn in the fluid such that the tangent to it at every point is in the direction of the vorticity vector ओमेगा. सो अगर ओमेगा जैसे कि वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट होंगे, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, एंड आर जो है पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. पॉइंट पी है जो कि वॉर्टेक्स लाइन के ऊपर है. सो कहीं यहाँ पॉइंट पी लिया और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए हम ये एक्सिस लें. सो दिस इज द डिस्टेंस विच इज आर एंड ये वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से शो हो रही है. सो ओमेगा जो है इज पैरेलल टू डी आर. ओमेगा इज पैरेलल टू dr at p on the vortex line. ये क्या है? vorticity वेक्टर है. सो इसका मतलब हुआ ओमेगा इंटू डी आर. ओमेगा भी वेक्टर है तो हम थिक लाइन से दिखा सकते हैं या फिर हम इसको डैश से दिखा सकते हैं. सो दिस इज ज़ीरो. ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के इन क्रॉस प्रोडक्ट डी आर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के इज इक्वल टू ज़ीरो. और हमें पता है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस k is equal to I cross k is j and k cross I is माइनस j. इन क्रॉस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम I के कोफिशिएंट्स j एंड k के कोफिशिएंट्स लिखते हैं. सो I के कोफिशिएंट्स हैं, I is coming from these two, which is j cross k omega y into dz minus omega z into dy plus for j it will be omega x into dz minus then we will have k omega z into dx. This is for j and for k will be so each is ज़ीरो मान लीजिए. वेंस
omega y dz minus omega z dy is equal to 0. This will give from second and from third. Therefore we can write down ये इक्वेशन जो है ऑफ वर्टेक्स लाइन है, ठीक है. नाउ वी कम टू vortex ट्यूब एंड vortex फिलामेंट. vortex लाइंस एंड ट्यूब्स जो हैं ओरिजिनेट भी नहीं होती हैं और टर्मिनेट भी नहीं होती इंटरनल पॉइंट्स पर ऑफ फ्लूइड के. ये सिर्फ क्लोज्ड कर्व हो सकते हैं और टर्मिनेट हो सकती है बाउंड्री पर, ख़त्म हो सकती है बाउंड्री पर. इसका प्रूफ अवेलेबल है बट वो हम नहीं कर रहे हैं अभी. सो वर्टेक्स ट्यूब जो है वो क्या हो सकती है, इफ़ वी ड्रॉ the vortex lines from each point of a closed curve in the fluid, we obtain a tube called the vortex tube. And vortex tube of infinitesimal cross section is known as vortex filament or simply a vortex. So हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये फ्लूइड है तो जो हमने कर्व ड्रॉ किया वो कर्व क्लोज्ड कर्व होगा अगर फ्लूइड पार्टिकल्स इनसाइड द फ्लूइड, और अगर ख़त्म भी होगा तो ये एंड पॉइंट पर तो ख़त्म हो सकता है लेकिन बीच में ख़त्म नहीं हो सकता. सो दिस इज़ द थिंग दैट vortex lines and tubes cannot originate or terminate at internal points in a fluid. They can only form closed curves or terminate on boundaries. So now rotational and irrotational motion. So motion of a fluid irrotational तब कहलाएगा जबकि vorticity vector
omega of every fluid particle is 0. When the vorticity vector is different from 0, the motion is said to be rotational. तब rotational कहलाएगा. So the motion of a fluid is said to be irrotational when the vorticity vector omega of every fluid is 0. इसका मतलब क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू कर्ल क्यू था एंड ये 0 के इक्वल है, तब इरोटेशनल है. और अगर ये 0 नहीं है तब ये रोटेशनल है. When the vorticity vector is different from 0. Is called rotational. So ओमेगा हमें पता है, ओमेगा है So if curl Q is 0 और ओमेगा is 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे सो ये इक्वेशंस मिल गई. एंड व्हेन द मोशन इज इरोटेशनल मीन्स कर्ल इज इक्वल टू 0 है, तब Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म माइनस ग्रेड फाई फॉर सम स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई से, बिकॉज कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0. सो इसका मतलब क्या है? कर्ल Q इज इक्वल टू 0. देन Q मस्ट बी of the form minus grad phi for some scalar point function phi, because curl grad phi is equal to 0. Thus velocity potential exists whenever the fluid motion is irrotational. Velocity potential exist करेगा अगर fluid motion is irrotational. और जब वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, मोशन इरोटेशनल है, तब Q इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई. इट इम्प्लाइज दैट कर्ल Q इज इक्वल टू माइनस कर्ल, दोनों तरफ कर्ल ले लिया इसके, कर्ल ग्रेड फाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन के दोनों साइड कर लिया. सो कर्ल Q इज इक्वल टू
माइनस कर्ल ग्रेड फाई विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज कर्ल क्यू इज इक्वल टू 0 है. It means this whole thing will be equal to 0. Thus the fluid motion is irrotational. Thus the fluid motion is irrotational if and only if the velocity potential exists. सो इस पर क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो सेड टू बी vortex मोशन. And by definition it follows that there are no vortex lines in an irrotational fluid motion. सो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को देखने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, और ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है ए बी सी डी जिसकी डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, इधर डेल्टा वाई है. अब हम किसी डेल्टा टी टाइम इंस्टेंट पर ये हम ड्यूरिंग ए स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी रोटेट कर देते हैं फिगर को. तो ए से हम यहाँ पर वाई एक्सेस से डेल्टा बीटा और ये एक्स एक्सेस से डेल्टा अल्फा, स्मॉल रोटेशन. So this becomes b dash c dash t dash and velocity component देखें तो u इस डायरेक्शन में है and v इस डायरेक्शन में है. So at a uv जो है velocity components हैं at a. तो components of velocity along BC हो जाएगा v plus del v upon del x into del x. जो वेलोसिटी यहाँ पर थी v जो चेंज हुआ x के रिस्पेक्ट में, del v ओवर del x into del x, और इधर हो जाएगी u प्लस del u ओवर del y del y. सो ये हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a along bc is equal to del v over del x into del x and velocity of d along dc relative to a. ये है del u over del y and bb dash will be del v over del x into del x
into del t, and dd dash this point they will match. dd dash will be minus del u upon del y into del t. Because opposite direction में ले रहे हैं, d dash d will be positive. Hence the angular velocity of AB about z axis z will be perpendicular to A here, perpendicular to the plane through A. Angular velocity of AB about z axis, and z axis क्या होगी, perpendicular to the plane through A. So this can be written as limit delta t tends to 0 del alpha upon del t. So this is limit del अल्फा इतना स्मॉल है कि हम उसे 10 अल्फा के इक्वल ले सकते हैं. This is a small quantity, so we can think of 10 delta alpha is equal to delta alpha. So now we put the value of 10 delta alpha. This is BB dash upon AB, and AB is del x upon del t, and AB is given here. So this is limit delta t tends to 0 del v upon del x, because this is BB dash already calculated, del x del t upon del x del t. So cancels out del x del t, del v upon del x बच गया. And similarly हम कह सकते हैं the angular velocity of AD about z axis is equal to limit delta t tends to 0, जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा बीटा जो है अगेन हम यहाँ पर करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 डेल्टा बीटा, जैसे पिछले केस में क्या था अपॉन डेल टी. और ये अगर हम डेल्टा बीटा 10 डेल्टा बीटा की वैल्यू रखें, सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी डी डैश अपॉन ए डी, that is del y, d d dash upon ad, which is del y upon del t. So this becomes limit del t tends to 0 del u upon del y, ये d d dash की वैल्यू, and del y del t upon del y del t. So this becomes del u upon del y, and this is with minus sign, so this is minus. Now हम जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड ए डी को डब्लू ओमेगा बार से डिनोट करते हैं. ओमेगा बार इज एवरेज
angular velocity of velocities of AB and AD, तब क्या होगा, ओमेगा बार इज इक्वल टू, एंड दिस इज अबाउट z एक्सिस, 1/2 del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y. इसी तरह हम ओमेगा बार x ओमेगा बार y निकाल सकते हैं. सो ओमेगा बार x विल बी 1/2, जस्ट सिमिलरिटी से लिख लेते हैं कि क्या वैल्यू होगी, 1/2 del w अपॉन del y माइनस del v अपॉन del z. सो जैसे कि ये z के रिस्पेक्ट में आए तो इसमें एक्स वाई टर्म है, और ये z के रिस्पेक्ट में है, इसमें ये x एंड y की टर्म है, और ये x के रिस्पेक्ट में है तो y एंड z की टर्म है. एंड हाउ टू डिनोट दैट, uv are the components, so if we say along z it is w, then this is the value of w. So we say u, v, w are components of velocity. तब आपका ये wx, तब ओमेगा x is equal to, this is omega and this is w, 1/2 and del ओमेगा अपॉन, ये भी आप अगर सोचें तो ये वही कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें ओमेगा में मिले थे. सो ओमेगा में भी हमें यही मिला था, del w अपॉन del y माइनस del v अपॉन del z, एंड ओमेगा y इज इक्वल टू 1/2 del u अपॉन del z माइनस del w अपॉन del x. और अगर आप ओमेगा को रिमेंबर करें तो j का कोफिशेंट भी del u अपॉन del z माइनस del w अपॉन del x था, एंड here it is half because average is being taken. ओमेगा z ऑलरेडी लिखा है. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगी ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट is given by, this is equal to I omega x plus j omega y plus k. These are the unit vectors, these are also velocity vector, angular velocity. So this is the, now we put the values. So omega is equal to 1/2 कॉमन ले लिया, I into del w upon del y minus del v upon del z plus j. This is half of that, half of curl q होगा, half of omega होगा, and omega is equal to curl q. So this is j del u upon del z minus del w upon del x plus k del v upon del x minus del u upon del y. So omega is equal to 1/2 curl q, and we can write that omega is equal to curl q, because this is vorticity vector. So and this we can write 2 omega is equal to curl q. It means 2 omega is equal to this omega. Here it is angular velocity and this is the vorticity vector. So now we can make 2 remarks. First remark is that omega is also called rotation. The condition for the two-dimensional flow, this is 2D flow we are taking,
2D flow to be irrotational, that the rotation is that the rotation WZ is 0, everywhere it is 0. That is, we can say WZ we can see is del V upon del X is equal to del U upon del Y, component of K, coefficient of K. Again the condition for irrotationality in 3D, condition for irrotationality in 3D is that in the flow everywhere in the flow that all the three components are equal to 0, which we got in omega. Any omega, you can say W omega, shape of W, or otherwise that was half of that, so that also makes these equal. And second point is a flow in which the fluid particle also rotate, that is, possesses some angular velocity about their own axis while flowing is said to be rotational flow. Again, a flow in which the fluid particles do not rotate about their own axis and retain their original orientations is said to be an irrotational flow. So this is theoretical concept here, but in mathematics we will be using the equations, and the important ones are streamlines, vortex lines, then velocity potential flow, and rotational, irrotational. This is important topic because question comes from this topic. In the next lecture we will be doing the questions based on it. Thank you.